Hello friends, how are you all doing? Hope you all are good. So today I'm going to take up Unit 5 Human Physiology's first chapter, that is digestion and absorption. We have already discussed about the human digestive system parts, which are alimentary canal and digestive glands. Now we are going to study about the process of digestion, okay? How the food is converted into, the macromolecules are converted into micromolecules. So all these things we will discuss today. First of all, you should know that this digestion process is actually further having 5 phases, okay? The first is ingestion, then digestion, absorption, assimilation and egestion. So ingestion means, as the name suggests, okay? In means simply in the digestion process when we take food inside, simply the intake of food, okay, and which occurs through mouth, right? So that is simply ingestion. Then digestion is a process, you all know, that where bigger molecules are converted into the micromolecules, smaller molecules, that is digestion, okay. The next, absorption. Now those smaller molecules, or the micromolecules, those which are converted in the stomach and the intestine, those micromolecules contain some essential nutrients, alright. So those nutrients are then transferred from alimentary canal to the blood. Yes, okay. That transfer is called as absorption. And then assimilation. After the transfer of nutrients from alimentary canal to the blood, then those important nutrients are transferred from blood to different parts of the body. आपकी body में tissues हैं, organs हैं, everything requires energy, and for that nutrients has to go to that particular place, right? So that process where nutrients are transferred from blood to different organs, that is called as assimilation, okay. And finally the egestion means when the undigested food which is left in the large intestine, that is given out in the form of the feces, or you can even say fecal matter, okay. So that is egestion. So this is actually the general idea about digestion phases, but today we are going to study in detail digestion. Yes, what happens in each and every part of the alimentary canal, starting from the oral cavity, okay, till the large intestine. क्या क्या होता है digestion में, कैसे कैसे होता है. So we are going to discuss those things. So digestion of food, actually that is a mechanical and a chemical process, okay. Here mechanical means muscular actions are also involved, chemical means chemicals are also involved. What are those chemicals? We are going to discuss now, okay. So we will take one by one all the parts of the alimentary canal. So first it is oral cavity, okay. मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है. What is oral cavity? What are the parts in oral cavity? You know, teeth and muscular tongue is there, okay. So no need to discuss those things again and again. So in oral cavity, what happens? See, food enters through mouth, right? And after entering through mouth, what happens? Teeth break down the food, okay? आपको पता है. After that, you all know that mouth contains, the oral cavity contains saliva, right? This saliva is containing two things or two substances. What are those two substances? Some important enzymes, all right? First is salivary amylase and the second is lysozyme, okay. These are the enzymes, but these two enzymes are having different roles. What are the roles? Salivary amylase break down the starch, glucose, all those things means carbohydrates, the bigger macromolecules, right? So hydrolysis का मतलब क्या होता है? Hydrolysis means जो इसका main structure है उसको break down करना, okay, with the help of water. Hydro means water. So in the presence of water, bigger molecules को जब break करते हैं हम smaller molecules में, that is hydrolysis. Lysis means simply breaking down something, okay. So here what is the function of amylase? Actually 30% of starch is broken down here, not 100%, okay. Only 30% starch जो होता है वो break down होता है. And what is the role of lysozyme in the saliva? एंटीबैक्टीरियल. एक्चुअली अगर कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, जब फूड आप लेते हो उसमें अगर कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है माउथ में, तो उसको क्या करता है? ये रोकता है. इट स्टॉप्स दैट बैक्टीरियल एक्टिविटी. देन यू कैन से इट इज़ एंटीबैक्टीरियल विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, ऑलराइट. देन what happens actually to the starch? Because of the salivary amylase, starch is broken down into, starch is a bigger
Polysaccharide, you can say carbohydrates को polysaccharide भी बोलते हैं, if you remember, okay. So these are converted into disaccharides. Disaccharides means where we have two units, like glucose plus glucose means disaccharide. Di means two smaller units, right? So disaccharide means maltose. So starch is broken down into maltose in the presence of salivary amylase whose pH is 6.8. Alright. Then see, in this oral cavity further what happens, the food which you have taken, you chew that food with the help of teeth, alright, and that is broken down into small particles, and then saliva further moistens, lubricates the food, and finally that food is converted into small ball-like structures which we call bolus, okay, and that bolus is further then swallowed towards the esophagus, okay, and when bolus goes to esophagus, it moves by peristaltic movement. Peristaltic movement means जो आपकी गट होती है उसमें मूवमेंट होती है, मस्कुलर मूवमेंट्स, जिसके थ्रू क्या होता है, जो आपका पार्टिकल है वो क्या होता है, मूव करता है डाउनवर्ड्स, ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टालसिस, और यू कैन से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, जिसकी वजह से फूड जो होता है दैट इज एबल टू मूव डाउनवर्ड्स, ऑलराइट. सो ऑल दीज एक्टिविटीज अकर्स इन द ओरल कैविटी, ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट इज स्टमक. नाउ व्हाट हैपेंस इन द स्टमक? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट वी हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक. म्यूकोजा, आपको पता है गट होती है, उसमें इनर लाइनिंग म्यूकोजा होती है, ओके, एंड दैट म्यूकोजा इज हैविंग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. व्हाट आर दोज ग्लैंड्स? फर्स्ट, म्यूकस नेक सेल्स which secretes what? Mucus, this is the secretion, okay. Peptic cells, they secrete pepsinogen. Parietal cells, they secrete HCl, hydrochloric acid, okay. So all these three are the gastric glands, they secrete some kind of secretions, okay. Now what happens? फूड इज मिक्सड विद ऑल गैस्ट्रिक जूसेस, ओके, बाय चर्निंग मूवमेंट. जैसे मिक्सी में एक कैसे मिक्स होता है कुछ भी, वैसे ही आपके स्टमक में भी इस तरह की कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती है, जिससे क्या होता है, फूड अच्छे से मिक्स होता है, ओके. बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट्स फूड फाइनली फॉर्म्स काइम. नाउ वी आर नॉट गोइंग टू से फूड. अब क्या बन गया, गैस्ट्रिक जूसेस मिल गए, उसमें मिक्स हो गया अच्छे से. नाउ वी विल कॉल इट काइम. काइम मीन्स इट इज़ नाउ सेमी डाइजेस्टेड फूड. मीन्स अभी पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अभी क्या हाफ डाइजेस्ट हुआ है. सेमी मीन्स हाफ, ओके, एंड दैट हाफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज काइम विच इज फॉर्म्ड इन द स्टमक, ऑलराइट. नाउ इन स्टमक व्हाट इज हैपनिंग? आई टोल्ड यू अबाउट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पीछे अभी मैंने बताया पेप्सिनोजन, ओके. Pepsinogen, friends, actually when we write nogen ना, that means this is the inactive form of enzyme. वो enzyme आपको पता है, मैंने बहुत बार बताया, enzyme is a substance which speed up the particular reaction, जो क्या करता है, किसी भी reaction की speed को बढ़ाता है. that is the main function of the enzyme, right. अब जो नोजन है, why we are writing here pepsinogen and here pepsin, see this is the inactive form, मतलब अभी ये active नहीं हुआ है. so we have to activate this if we want to make a digestion process successful, okay. So pepsinogen, which is present in the gastric gland in the presence of hydrochloric acid, means pepsinogen को जब HCl मिल जाता है, what is happening here, it is converted into pepsin, and the pepsin is now the active form of enzyme, okay, and this pepsin will be included further in the process of digestion, all right. Now you know that food contains different nutrients, proteins, vitamins, carbohydrates and all, okay. So what happens to the proteins in stomach? Proteins with the help of this enzyme now are converted into smaller micromolecules. What are those micromolecules? Proteoses and peptones, all right. And there is one more thing, in infants what happens, we have, instead of pepsinogen we have prorenin, all right, in the stomach. Prorenin is again, pro means it is inactive, okay. So in the presence of HCl it changes into renin, but this activity occurs in the infants. And also in infants what happens, casein is actually a milk protein, okay, that is also a protein. So in जो ये active हो गया है अब infants में जो enzyme है, what happens, this casein is with the help of this enzyme changed into smaller molecules, that is peptides, okay. So all these activities are occurring in the stomach. I hope you understood the concept. Now next is, you know, then food passes to the small intestine. Now the small intestine, which food is passing now? From the stomach, and stomach food is called chyme, right. Now this chyme is further mixed
with some small intestinal juices and churned, okay, everything is happening here. And then pancreas and liver, okay, you know that small intestine mein pancreas and liver, they also secrete their juices and enzymes, okay, and they helps in further breakdown and absorption of food into the blood. All right, so this happens. Then absorbed nutrients are assimilated upon reaching target. I told you just now that what is absorption and what is assimilation, so no need to discuss this again and again. So this happens, and not only this, now we will look into the book. See, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाट इज हैपनिंग हियर. नाउ यू नो दैट small intestine receives pancreatic juices, okay, and those pancreatic juices which are coming from the pancreas, all right, they contain some enzymes, and those enzymes are required to break down the macromolecules. अब क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑल दीज प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोसेस, ओके, जो स्टमक में बने थे ना, पेप्टोन्स, प्रोटियोसेस, ओके, with the help of enzymes of pancreatic juice. What are those enzymes? You can see here, it's already given in your book, trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase. All these enzymes helps in the conversion of these into dipeptides, means again smaller molecules, okay. होना क्या है, ब्रेक डाउन ही होना है फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर. सो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, यू हैव टू लर्न द नेम्स, एक्चुअली दीज आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स थिंग्स, सो like that. Then this was about proteins. Then what happens to carbohydrates? Pancreatic juices, see, polysaccharides or starch or carbohydrate, okay, with the help of amylase, pancreatic amylase, which is again an enzyme, it changes it into disaccharides, smaller units, okay. And what happens to fats? जो फूड आपने लिया है उसके फैट्स का क्या होता है, फैट्स विद द हेल्प ऑफ अगेन पैनक्रियाटिक लाइपेसेस, ओके, they are converted into diglycerides, okay, and then finally mono में change जाता है, again simpler form, all right. And what happens to nucleic acids, which are also again a bigger molecules? So nucleases, these are the enzymes from pancreatic juices, okay, they changes into nucleotides and then further nucleosides, which are again a smaller molecule, okay, this happens. So this was about pancreatic juices, okay. अब पेनक्रियाटिक जूसेस का काम हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑलराइट. अब बारी आती है जो इंटेस्टाइनल जूसेस हैं. सी, द एंजाइम्स इन सक्कस एंटेरिकस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स नेम. सक्कस एंटेरिकस मीन्स intestinal juice, okay, the juices which are secreted from the intestine itself. Now these intestinal juices, what they do, all these substances, see, bigger to smaller, okay, and the intestinal juices will again break down these smaller into very small particles. इनको भी further क्या करेगा, वो break down करेगा, all right. So what is this actually? Now see what happens here. This intestinal juice will do that dipeptides, okay, these dipeptides will be, आपने देखा यहाँ dipeptides बने, okay, so will be converted into amino acids, which are again simplest form, जिसको आप बोलते हो मोनोमर. प्रोटीन का मोनोमर मैंने आपको पहले भी बताया, which is amino acid, right. with the help of dipeptidases, तो आप देख सकते हो क्या क्या बन रहा है, maltose, glucose plus glucose, maltase की presence में. all these are the actually enzymes which are converting bigger molecules into smaller molecules. Lactose, then sucrose, then nucleotides, and then di and monoglycerides, like this, okay. So this happens to the bigger molecules. Then this was about small intestine, okay. I hope you got the idea. So small intestine में ये सब कुछ होता है. Now friends, we will see one important thing, that जो duodenum है, okay, you know the parts of the small intestine, duodenum, jejunum, ileum, okay. The duodenum part is meant specially for breaking down macro to micromolecules, okay. That is the function of the duodenum. But this jejunum and ileum part, they are meant for absorption. Yes, absorption means the nutrients from micromolecules, they transfer them into the blood, okay. So jejunum and ileum meant for absorption and duodenum meant for breakdown or digestion. So it's like this. Now what happens, जब सब कुछ हो गया, absorption हो गया, digestion हो गया, अब क्या बचता है? Now undigested food is left or unabsorbed food is left, okay, which is not having any kind of use in the body. So that undigested food is finally transferred to the large intestine, all right.
सो ऐसा होता है. अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है, फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट इज डन, देन इट्स लार्ज इंटेस्टाइन टर्न. व्हाट इज हैपनिंग हियर? नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स. ओके, कोई डाइजेशन में पार्ट प्ले नहीं करता है ये. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव लार्ज इंटेस्टाइन? सिंपली it absorbs some left water, mineral and if even there are some drugs. okay, अब जैसे कोई water है, mineral या कोई medicine लिया है, कुछ लिया है, तो उसकी further absorption करता है अगर कोई left रह जाता है आपकी small intestine में. okay, and then what happens then? Secretion of mucus. yes, large intestine जो होती है आपकी, it secretes some mucus or liquid material which attaches or which adheres to the undigested food. अब वो क्यों अनडाइजेस्टेड फूड के साथ, सपोज दिस इज अनडाइजेस्टेड फूड, उसके साथ वो थोड़ा सा अटैच हो जाता है म्यूकस और लिक्विड मटेरियल, सो दैट इट लुब्रिकेट्स दैट फूड. जो आपका इजी पैसेज होना है, आउटपुट होना है रेक्टम एंड देन एनस से, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली स्मूथली आउटपुट बाहर निकल आए, उसके लिए सिक्रीशन ऑफ म्यूकस अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, सो दिस हैपन्स हियर. Then finally, you know, undigested food which is called as feces, it enters into the cecum. okay, अब आपको पता है जो इलियम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, so from where that undigested food enters the cecum and there is a valve which is called ileocecal valve. Ileocecal means which guards ileum and cecum part of the valve, large intestine. अब जो ये valve है वो क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर. तो जो फीकल मैटर लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है वो वापस आपका इलियम पार्ट में ना जाए स्मॉल इंटेस्टाइन के, सो दैट रीजन इज गार्डेड बाय अ वेल्व. ओके, सो इट चेक्स द बैक फ्लो एंड फाइनली डेफिकेशन होती है, आउटपुट हो जाता है. ओके, एंड रिमेंबर वन थिंग, एवरीथिंग इन दिस डाइजेशन प्रोसेस इज further controlled by neural and hormonal control. means आपका everything is controlled by brain as well as hormones. okay, so this is about this. So this was about digestion and assimilation, absorption, everything. okay, I hope you got the idea. next friends, calorific value. calorific value अगर हम बात करें, कैलोरिफिक इन द सिंपल सेंस मीनिंग एनर्जी कंटेंट ऑफ द फूड. जो आपने खाया है, व्हाट इज़ द एनर्जी कंटेंट? ओके, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द calorific value. If we talk about its definition, it is given here: amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. अगर आप सिंपल शब्दों में कहना एक्सप्रेस करें तो जो एनर्जी कंटेंट होता है फूड का, कितना एनर्जी आपको मिलता है, दैट इज़ एक्चुअली द कैलोरिफिक वैल्यू. सो आप देख सकते हो ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स. 4.1 kilocalorie per gram it's for carbohydrates. okay, it's like this. So this is like this. Then further we have then its absorption and digestive products. Now I told you that absorption is the next phase after this digestion, okay, of digestion process. Absorption means where end products of digestion. Now you know the end products are micromolecules which contains essential nutrients. all right, so those nutrients are then finally passed into the blood. okay, that is called as absorption and it can be carried out through passive transport, facilitated transport, all these transports. okay, we have already discussed that facilitated transport and active transport where energy is required, passive transport, simple diffusion where no energy is required. okay, so all these are the ways by which the nutrients are supplied into the blood. okay, so that is the absorption process. Then there is one more thing here to be noted, that maximum absorption occurs in the small intestine. okay, small intestine is the part of the alimentary canal where maximum absorption takes place. Now you can see the summary where it's given the summary of absorption in different parts of digestive system. all right, we have mouth, what is absorbed in which part. okay, that is given here. so you'll all just, it's better to read it out properly, everything. okay, it is really very easy, you will easily understand. आपको अच्छे से एक बार रीड करना है, इसको पढ़ना है, आप इजीली समझ जाओगे. जैसे माउथ है, certain drugs,
okay, are absorbed into the blood. Stomach में क्या होता है, water, sugar, little alcohol, like alcohol is absorbed. Small intestine, okay, where glucose, fructose, fatty acids are absorbed. Large intestine में आपको अभी बताया मैंने that water, some minerals and drugs are transferred into the blood. So this is a kind of a summary chart where you will see that different organs plays a role in the absorption of the different substances. Okay, then I told you, then after absorption what happens, those substances finally reach the tissues, okay, tissues or organs where the energy is required, okay, and then it is utilized for various activities, and this process is called as assimilation, okay. So all these things, and finally egestion occurs where fecal matter is removed through anal opening, which is also known as defecation. Defecation means egestion of feces, okay. So this is, children, about the digestive system, its structure and functioning, where digestion process involves further different phases, okay. So I hope you understand this thing. देन डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. अब डिसऑर्डर्स भी होते हैं कई बार. क्या होता है, जो आपका इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देयर मे हैव सम स्वेलिंग और पेन, ओके, इन्फ्लेमेशन जिसको बोलते हैं. सो बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन विच कैन बी कॉज्ड बाय पैरासाइट्स लाइक टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, अगर आपकी बॉडी में चला जाता है बाय एनी मीन्स, ओके, सो उनका एग या कुछ भी किसी तरह से भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपको कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एवरीथिंग इज गिवन हियर. लाइक जॉन्डिस, ओके, यू नो, इन जॉन्डिस लिवर इज अफेक्टेड, स्किन आइज टर्न्स येलो, वोमिटिंग, यू नो व्हाट हैपन्स व्हेन ejection of stomach contents, stomach से जब बाहर आता है through mouth, okay, that is vomiting. That can also be because of some infection in the stomach, okay. Diarrhea, you know that when feces are not removing properly, even that is a liquid kind of matter. जो fecal discharge है वो liquid ही होता है, that is diarrhea, okay. Constipation means feces are retained within the colon. feces properly out नहीं होता है, that is still remained in the colon, that is constipation. problem होती है उसको करने की, इजेक्ट करने की, लाइक दैट. देन इंडाइजेशन, ओके, इफ फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस, ओके, ऐसा लगेगा जैसे आपका स्टमक हैवी सा है, ओके. इट कैन बी बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग स्पाइसी फूड. सो ऑल दीज आर दी एक्चुअली डिसऑर्डर्स. दिस इज वेरी ईजी, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड बाय रीडिंग इट कंप्लीट. लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, ओके, एंड लास्ट टॉपिक इज PEM. PEM means P for protein, E for energy, M for malnutrition. That means protein, energy, malnutrition, okay. Children, what happens actually in our diet, you know that we get different proteins, different vitamins, carbohydrates, fatty acids, all those things, okay. But if we are not getting protein rich diet properly, and not only protein but even our diet is deficient of other important food calories, okay, सो दैट इज़ कॉल्ड एज एक्चुअली प्रोटीन एनर्जी malnutrition. अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा था. कंट्रीज़ जो साउथ की हैं और साउथ ईस्ट एशिया लाइक साउथ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका वगैरह, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये रिपोर्ट किया गया था पास्ट में, the diseases which are based on protein energy malnutrition, okay. And what are the side effects, or you can say disorders generating through PEM? Those disorders are two. These are really very important, okay. First is marasmus and then is kwashiorkor. Marasmus means when there is a deficiency, okay, of proteins and some other calories, okay. So marasmus में होता क्या है, ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होती है, ओके. इट अकर्स यूजुअली फॉर इन्फेंट्स लेस देन अ ईयर इन एज. छोटे बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम हो जाती है, ओके. उनकी जो लिम्स होती हैं, आर्म्स, लेग्स, वो थिन रह जाती हैं, ओके. स्किन ड्राई हो जाती है और आपका फेस रिंकल हो जाता है, थिन, मतलब बहुत वीक सी बॉडी रहती है. बॉडी वेट भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, ओके. इवन द ब्रेन इज़ नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, मेंटल प्रॉब्लम्स आर देयर, ओके. मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड, मतलब वो इतना ज़्यादा वो उनका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है, ओके. ऑल दीज थिंग्स आर द सिम्टम्स ऑफ द marasmus. Then the next is kwashiorkor. Kwashiorkor is again a protein deficiency disorder, but that is
not accompanied with calorie deficiency means मार्समस में क्या था, deficiency of protein along with some calories. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर protein deficiency है but other calories or you can say high calorie diet जो है वो उसको मिल रहा है, जो पेशेंट है उसको कैलोरीज मिल रही है. सपोज हाई कैलोरी डाइट मीन्स लाइक फैट्स, जैसे आप बटर खाते हो, ऑयली प्रोडक्ट्स जो आप लेते हो वो तो उसको मिल रहा है बट प्रोटीन डाइट इज़ लैकिंग. ओके, सो इट रिजल्ट्स इन द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क. होता कब है, जब मदर मिल्क नहीं दे पाती प्रॉपरली और वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट फीडिंग ऑन हाई कैलोरी बट लो प्रोटीन डाइट. हाई कैलोरी बट लो प्रोटीन. ओके, सो इट कैन बी अकर इन अ चाइल्ड मोर देन 1 year इन एज, जो 1 साल से ज़्यादा है उनमें ज़्यादा है चांसेस होते हैं इसके होने के. ओके, सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोरकर? इट शोज वेस्टिंग ऑफ मसल्स. व्हाट इज वेस्टिंग? वेस्टिंग मीन्स व्हेन मसल टिश्यू इज़ लैकिंग और यू कैन से अ लॉस ऑफ मसल टिश्यू, बाय विच हम क्या कर पाते हैं, जो हमारी लेग्स होती हैं वो अजीब सा उनका एक शेप बन जाती है एंड वी आर नॉट एबल टू मूव आवर लेग्स. ओके, दैट मीन्स आवर मसल्स जो हैं उनमें प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाती, ड्यू टू विच वी आर नॉट एबल टू मूव आर लिम्स. ओके, एंड सम सिम्टम्स आर ऑलमोस्ट सेम लाइक मार्समस, लाइक थिनिंग ऑफ लिम्स, आपकी आर्म्स लेग्स वगैरह थिन हो जाती है, ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है प्रॉपरली. ओके, सो बट अनलाइक मार्समस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट. मैंने आपको अभी बताया हाई कैलोरी है, फैट्स वगैरह आपको मिलते हैं बट प्रोटीन डाइट इज़ नॉट देयर. ओके, सो एक्सटेंसिव ओइडमा हो जाता है. जो आप हाई कैलोरी डाइट ले रहे हो दैट इज़ लेफ्ट अंडर द स्किन, उसका शो हो जाता है, आपकी स्किन में रह जाता है वो. ओके, एक्सटेंसिव ओइडमा. ओइडमा मीन्स स्वेलिंग. ओके, स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स. सो दीज आर द काइंड ऑफ द सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन मार्समस एंड क्वाशियोरकर डिसऑर्डर विच इज़ जनरेटेड, दैट मीन्स प्रोटीन एनर्जी malnutrition, PEM. So this was about this chapter, digestion and absorption. I hope you all understood this content. If you still have some queries, you can ask me in the comment box. Okay, अगर आपको सच में अच्छी लगी वीडियो, so please like it and subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye.